everybody, welcome to my channel Grace Crenew. So today I am going to share a very simple and basic hair oiling routine which I am following these days. एक्चुअली ऐसा ही सेम एक हेयर ऑयलिंग रूटीन मैं पहले भी फॉलो करती थी, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था तो वो मुझसे रेगुलरली फॉलो नहीं हो पाता था. बट ये वाला जो ऑयलिंग रूटीन है बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा सिंपल है और इजीली अवेलेबल होंगे आपके घर पर इस वक्त. एक्चुअली जो हेयर ऑयलिंग रूटीन होता है वो वीक में आपको 2 टाइम्स फॉलो करना ही पड़ता है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो बहुत ईजी हो और सिंपल हो जिससे आप रेगुलरली उसे फॉलो कर पाएँ. कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स जो होता है फॉलो नहीं हो पाते हैं ईजीली. और इसमें लास्ट में एक जो स्टेप बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिटरली आपके हेयर ऑयलिंग रूटीन को यहाँ से यहाँ तक बना देगा. सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पता चल पाए कि वो लास्ट स्टेप क्या है और पूरा हेयर ऑयलिंग रूटीन क्या है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बोल में आपका हेयर ऑयल डालना है. कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, अपना रेगुलर कोकोनट ऑयल भी. उसके बाद आपको एलोवेरा जेल ऐड करना है. तो एलोवेरा जेल ऐड करते हैं. उसके बाद आई एम यूजिंग अ विटामिन ई कैप्सूल. विटामिन ई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके हेयर्स के लिए. सो मैं इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल डाल रही हूँ. एक से वैसे काम हो जाता है. अगर आपके हेयर्स ज़्यादा ही लॉन्ग हैं तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, एक और कैप्सूल ऐड कर सकते हैं. एंड नाउ आई एम एडिंग वेस्लिन पेट्रोलियम जेली. ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर रिस्टोरिंग मॉइस्चर इन योर हेयर्स. सो बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा. आपको थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है. और फिर इन चारों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है अच्छे से. ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी बेसिकली. नाउ यू नीड टू ओपन योर हेयर्स. फिर इसे ऐसे सर्कुलर मोशन में अपने हेयर्स में अप्लाई करना है. आई हैव टेकन अ टॉवल और मैंने इसे हॉट वाटर में डिप किया और सारा एक्सेस वाटर स्क्वीज आउट कर लिया था. दिस इज़ रियली अ वेरी इफेक्टिव स्टेप बिकॉज इससे क्या होता है, जो भी आपने हेयर ऑयल लगाया वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है हेयर में और मैक्सिमम बेनिफिट देता है आपके हेयर्स को. आपको इस तरीके से ये टाल अपने हेयर्स में रैप कर लेना है. Okay guys, so I am back and I have washed my hairs. I just used a normal shampoo and conditioner for washing my hairs and I have not used any kind of hair dryer for drying my hairs. And now just see the texture of my hairs guys. They're looking so live and so smooth right now. And just see the shine of my hairs. I am quite happy with it, but you know, there is some kind of frizziness over here. So what I am going to do, I am going to take a regular serum, hair serum, and I am taking it in my hand. And now I am going to add a little bit of aloe vera gel in it. And now just mix it well. Just see the consistency. And now I am going to apply it
in my hairs. लेंथ में अप्लाई करना है. And yes, I've applied the serum well and just see the difference. Just see the difference, guys. You know guys, basically क्या होता है, when I used to wash my hairs तो वो एक दिन बाद ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा flawless लगते हैं. But using this oiling procedure, मैं उसी दिन I can see a huge difference in my hair. Okay guys, so thank you so much for watching this video, and if you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Bye.